su Gurudeva de parte de todos nosotros. Me ayudan a traducir ya, por favor. आप सब भक्तों को एक एक को मेरा हृदय से नमन है, सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। Quiero saludar a todos, cada uno de todos ustedes. श्रीमद् भगवद गीता भगवान का अमर गीत है। El Bhagavad Gita dice que es la canción de Dios. गीता शास्त्र मिदं पुण्यम यह पठे प्रियता पुमान विष्णु पदम वाप्नोति भय शोकादि वर्जित। भगवान वेदव्यास ने कहा, जो भी भक्त श्रद्धा से गीता का पाठ करेगा वो मेरी प्राप्ति करेगा। Dice que Dios dijo en el Bhagavad Gita que cualquiera de ustedes que lea Gita de corazón va a conseguir la liberación. उसको 3 चीजें मिलेगी जो श्रद्धा से पाठ करेगा। Van a conseguir 3 cosas la que lo hace de corazón. सबसे पहली बात, भगवान विष्णु के पद की प्राप्ति करेगा, विष्णु भगवान बन जाएगा। Van a estar como en la misma altura de Vishnu. विष्णु भगवान सबका पालन करते हैं, वो सबका पालन करेगा। Dice que Vishnu cuida a todos, entonces esa persona también va a cuidar. सबको सुख पहुंचाएगा, va a dar felicidad a todos. सबको आनंद पहुंचाएगा, va a dar felicidad, ¿no? आनंद a todos. वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। Esa persona siempre va a ser feliz. पहले तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, उसके सारे जितने भय हैं, फियर्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। Dice que cualquier problema que tenga, miedo que tenga va a desaparecer. भय शोकादि वर्जित। शोक कहते हैं चिंता, वो सारी चिंताएं मिट जाएंगी उसकी। Cualquier problema que tenga va a desaparecer. तो बाकी आवश्यकता जो जरूरत है वो क्या है? 2 चीजों की। एक तो श्रद्धा से पाठ करें। Dice que se necesita que uno haga el paठ, que lo lea con mucha fe. अभी मैं देख रही थी तो नीली है, ये सारी बहनें हैं, इनको तो इंग्लिश नहीं, स्पेनिश में पढ़ के पाठ, बड़ा सुंदर पाठ कर रहे हैं। Dice que ha estado observando que la hermana Nelly y muchas de ustedes que no saben hindú están haciéndolo de mucho corazón. स्पेनिश में लिखी है गीता और वो पढ़ के इतना सुंदर पाठ उन्होंने किया। Dice que lo leen en castellano y lo hacen tan de corazón. वो जो स्पेनिश में लिखी है 12 चैप्टर, उसकी कॉपीज बना करके अपने साथ ले जाओ आप। Dice que lo que está escrito en castellano que saquen copias y que lo lleven con ustedes. और जिनको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश वाले कागज ले जाएं अपने साथ। Y los que quieran en inglés también pueden llevar la traducción en inglés y lo pueden con ellos, ¿no? Y lean de ahí. रोज इसका पाठ करो। Dicen que lean todos los días sin faltar. रोज हम खाना खाते हैं, todos los días comemos. दिन में 3-4 बार खाते हैं, comemos 2-3 veces al día. सारे काम करते हैं, नहाते हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं। Dice que hacemos todo, comemos, trabajamos, nos duchamos todos los días. गीता के पाठ के लिए 3 मिनट निकालो आप, 12 चैप्टर जरूर पढ़ो। Dice que solo se necesita 3 minutos para leer el Gita y saquen tiempo para eso. किसी को भी मानो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर गीता सबके लिए, भगवान का गीत है, वो सबके लिए। Dice que podemos creer en cualquier religión, en cualquier cosa, pero hay que leer el Gita, que es muy beneficioso. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गीता पढ़ने में कि ये धर्म का नहीं, वो धर्म का नहीं है, हिंदू नहीं है, मुसलमान है, वो है, क्रिश्चियन है, सबके लिए गीता है। Dice que no hay ninguna restricción en leer el Gita. Uno puede ser cristiano como hindú, como musulmán, no hay ninguna restricción en leer el Gita. मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जैसे आकाश सबके लिए है। Como lo ha dicho anterior veces, también como ayer lo dijo, que el cielo es para todos. पृथ्वी सबके लिए है, la tierra es para
वायु सबके लिए है, el aire es para todos, चंद्रमा की चांदनी सबके लिए है, la luna es para todos, सूर्य का प्रकाश सबके लिए है। el sol, las rayos del sol es para todos. ठीक उसी तरह ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, सबके लिए है। Y así mismo este es la bendición de Dios y es para todos. गीता के अंदर चारों वेदों का सार है। Dice que hay 4 Vedas dentro del Gita. 18 पुराणों का निचोड़ गीता में है। Dice que hay 18 Puran en el Gita. सारे उपनिषदों का सार, कितने उपनिषद हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार? 108 उपनिषद। Dice que hay 108 Upanishads. इसलिए कहा है भगवान वेदव्यास ने, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। जितने सारे उपनिषद हैं वो गौ माता है, गौ माता। Dice que todos los Upanishads que están en el Gita son las madre vacas. गौ माता क्या देती हैं? दूध देती हैं। Dice que la vaca dan leche. इन सारे गौओं का दूध है श्रीमद् भगवत गीता। Y dice que la leche de todas estas vacas es el Bhagavad Gita. इन गौओं का दूध निकालने वाले ग्वाले कौन है? कोई दूध दोएगा तब तो मिल्क करेगा, तो वो ग्वाले जो है जो दूध निकालते हैं इन गौओं का, भगवान श्री कृष्ण। Dice que esa persona que le saca la leche a las vacas es Krishna. गाय दूध कब देती है? जब उसके सामने उसका बछड़ा होता है, उसका बच्चा होता है, वो बच्चा है अर्जुन। Dice que cuando una vaca da leche cuando tiene a su hijo delante, entonces ese es Arjuna. और गाय माता अपने बछड़े को देकर के प्रेम में खूब दूध दे देती है। Y cuando la madre vaca ve a su hijo da mucha leche. और अर्जुन वो दूध पीता जा रहा है। Y Arjuna toma toda esa leche. और बहुत ही सुधीर भोक्ता, इतना चतुर है कि एक भी दूध की बूंद यहाँ वहाँ नहीं गिराता। Dice que es tan travieso que no deja ni una sola gota que caiga en ningún lado. सारा दूध पीता जा रहा है और उसको हजम करता जा रहा है। Dice que toma toda esa leche y lo digiere. डाइजेस्ट करता जा रहा है। इस तरह से ये सारे उपनिषदों का सार है। Y dice que esto es lo básico del Upanishad. आप सोचो 108 उपनिषद कब पढ़ेंगे? Dice que imagínense cuándo vamos a leer todas estas Upanishads. 18 पुराण कब पढ़ेंगे? ¿Cuándo vamos a poder leer esos 18 Puranas? एक महाभारत पुराण में ही 100,000 श्लोक है, 1,00,000 श्लोक है एक महाभारत पुराण में। Dice que en el Mahabharata hay 100,000 un millón de slokas. आप सोचो ऐसे 18 पुराण है, Dice que así mismo hay 18. हम कब पढ़ेंगे, कब समझेंगे? ¿Cuándo vamos a poder tener el tiempo de leer y cuándo vamos a entender? गीता में सारे उपनिषदों का, सारे पुराणों का, 6 शास्त्रों का सार एक गीता के अंदर है। Y dice que dentro del Gita está todo esto, está dentro del Gita. इसका पाठ 1 घंटे में हो जाता है। Y el path se puede hacer en una hora. तो गीता को पढ़ने मात्र से सारे वेदों के पढ़ने का पुण्य मिल जाता है। Y dice que con esto, leyendo el Gita, se puede conseguir la bendición de todo esto. ये मनुष्य, ये भक्त निहाल हो जाता है, खुश हो जाता है। Dice que cuando la persona lee esto, se pone contenta. हम रोज गाते हैं गीता की आरती में, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, ओम जय भगवद गीता। सारे शास्त्रों की रानी है। Dice que está la reina de todos los shastras. तो हमको जरा भी समय न गंवा करके एक 12वां अध्याय पढ़ लेना चाहिए रोज। Dice que no debemos perder ni un instante, que debemos de leer el capítulo 12 del Bhagavad Gita, que es muy importante.
ये नियम धारण करो अपने जीवन में। Dicen que debe de ser como una costumbre, así como comemos y cenamos y nos duchamos, debe ser una parte de una costumbre. चाहे किसी को मानो, No importa que creamos en cualquier santo, en cualquier Dios, en cualquier religión. चाहे किसी सत्संग में जाओ, No importa que vayamos a cualquier lugar, a un satsang cualquiera de ellos. कोई प्रॉब्लम नहीं है। No hay ningún problema. परंतु गीता का 12वां अध्याय नियम से रोज पढ़ो। Pero háganlo una costumbre leer el capítulo 12 del Bhagavad. उसके बाद आप खुद कहोगे कि इसके पढ़ने से हमें क्या प्राप्ति हुई है। Y así mismo se van a dar cuenta que qué van a conseguir leyendo el Gita. भगवान ने गीता का ज्ञान सारे संसार के सारे विश्व के लिए दिया है। Dice que Dios ha dado el Bhagavad Gita para todo el mundo. एक बार अर्जुन ने पूछा भगवान से, प्रभु आप कृपा करके बताओ गीता पढ़ने की क्या महानता है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग गीता? Dice que un día Arjuna le preguntó a Dios cuál es la importancia de leer el Gita. भगवान ने कहा, अर्जुन इसका जवाब मैं तुमको नहीं दूंगा, तुम यहाँ से वेस्ट में जाओ, वहाँ पर तुमको एक कौवा बैठा मिलेगा, क्रो, आप उससे पूछो। Dice que Dios le dijo que no te voy a responder sobre esta pregunta, pero tú vayas al oeste y ahí vas a encontrar un cuervo y ahí vas a saber. अर्जुन गया पश्चिम में, वेस्ट में गया तो उसको एक पेड़ पे कौवा बैठा मिला। Y Arjuna fue al oeste y ahí encontró encima de un árbol un cuervo sentado. अर्जुन ने पूछा, कौवे महाराज कृपा करके बताओ गीता पढ़ने की क्या महिमा है? Y así le saludó y le dijo, por favor cuervo, dígame qué consigo leyendo el Gita. प्रश्न पूछते ही वो कौवा मर गया। Y así mismo cuando le preguntó, el cuervo murió, falleció. जवाब तो मिला नहीं अर्जुन को। Y no consiguió ninguna respuesta. अर्जुन दुखी मन से भगवान के पास आया, बोला प्रभु जवाब तो मिला नहीं, वो कौवा तो मर गया। Y Arjuna regresó muy triste donde Dios y le dijo, cuando yo le hice la pregunta el cuervo falleció, ahora no pude conseguir ninguna respuesta. भगवान ने कहा घबराओ मत, अब तुम ईस्ट में जाओ, पूरब में जाओ, वहाँ पर तुमको एक हंस मिलेगा, हंस से पूछ लेना। Y Dios le dijo, no te preocupes, ve al este y ahí te vas a encontrar con un ciervo y a él pregúntale y él te va a poder contestar. अर्जुन गया ईस्ट में तो बराम पर बैठे हुए एक हंस मिला, उससे पूछा, हंस महाराज कृपा करके बताओ गीता पढ़ने की क्या महिमा है? Y entonces fue al este y ahí se encontró con el ciervo y le dijo, por favor, dime cuál es la importancia de leer el Gita. इतना पूछना ही था तो हंस भी मर गया। Y así cuando le preguntó, el ciervo también falleció. अर्जुन को लगा पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया भगवान से, पहले कौवा मर गया, अभी हंस मर गया, मेरे ऊपर मुझे अपना पाप लग रहा है। Y Arjuna se preocupó y dijo que me va a caer a mí, que ahora le pregunté al cuervo primero y luego al ciervo y los dos se murieron y ahora qué me va a pasar a mí. अर्जुन आया भगवान से कहा, प्रभु वो हंस भी मर गया। Y Arjuna regresó a Dios y le dijo, ¿sabes qué? También falleció el ciervo. पर जवाब तो मिला नहीं। Pero no me respondió. भगवान ने कहा घबराओ मत, अब तुम नॉर्थ में जाओ, उत्तर में, वहाँ एक बहुत बड़ा राजा का महल है, आज राजा के पास बच्चा पैदा होने वाला है 14 साल के बाद, वो तुमको जवाब देगा। Y Dios le dijo, ve al norte y ahí te vas a encontrar con un palacio y ve dentro, ahí hay un rey y ese ha tenido un hijo después de 14 años y entonces pregúntale. अर्जुन ने मन में सोचा, पहले मैंने कौवे से पूछा, कौवा तो मर गया, इसने मुझे कुछ कहा नहीं, फिर मैंने हंस से पूछा, हंस ने भी कुछ कहा नहीं, हंस भी मर गया, इसने मुझे कुछ भी अक्यूज नहीं किया। अब राजा का बेटा अगर कुछ हो गया उसका तो फिर मेरी जान की खैर नहीं है। Y entonces
entonces Arjuna pensó y dijo, uy, primero fui donde el ciervo y primero fui donde el cuervo y se falleció cuando le pregunté. Luego le pregunté al ciervo y también falleció. Imagínense, voy a ir ahora donde el hijo del rey también va a morir y ¿qué me irá a hacer el rey? परंतु भगवान का हुक्म तो मानना है। Pero tiene que obedecer al rey. आया वहाँ पर Al Dios, perdón. Al Dios. राजा के दरबार में अर्जुन के पास जो पोशाक थी वो तो राजा ही पोशाक थी, कपड़े राजा ही पहने हुए थे, तो पहचान गई तो राजकुमार है। बड़ी इज्जत से उसको अंदर ले आए पहरेदार। Y cuando Arjuna fue al palacio vieron de que él tenía la ropa de un rey, entonces le hicieron entrar con mucho respeto. राजा के पास ले आए Y lo trajeron donde el rey. राजा ने कहा अर्जुन आओ आओ, बड़े आओ, भगत करी, इज्जत से बिठाया, बताओ तुम्हारी क्या सेवा करें। Y el rey lo hizo pasar con mucho respeto y le preguntó qué es lo que te podemos अर्जुन ने कहा महाराज आज मैंने सुना आपके पास बच्चा पैदा होने वाला है। Y Arjuna le dijo, hoy escuché de que usted iba a tener un hijo. मुझे उसे एक बस सवाल पूछना है। Y yo le quiero hacer una pregunta. राजा ने कहा बिल्कुल ठीक है। Y el rey le dio todo, le dijo, bueno, está बस bien. थोड़ी देर में ही एकदम से जो सखियां हैं दौड़ी हुई आई, सब दासियां कि बधाइयां हो बधाई, और राजकुमार पैदा हो गया है। Y enseguida vinieron las damas de la reina y empezaron a decir, felicitaciones, han tenido un príncipe. राजा ने हुक्म दिया कि बच्चे को नहला धुला करके वस्त्रों से, मखमली वस्त्रों में ढक करके ले आओ मेरे पास। Y el rey ordenó de que le ducharan y le limpiaran al bebé y que lo trajeran en ropas de seda. बच्चे को बड़े मखमली वस्त्रों में ढक करके राजा के पास ले आए। राजा ने अपनी माला उतार के सबको दक्षिणा में दे दी, इनाम दे दिया। Y al rey ya le trajeron al príncipe envuelto en ropas de seda y el rey empezó a dar todos sus collares de oro a regalar a toda la gente, a los devotos que habían venido. राजा बहुत खुश था कि 14 साल बाद मेरे पास बेटा पैदा हुआ। El rey estaba muy contento de que después de 14 años por fin había tenido un hijo varón. उठा के बच्चे को अर्जुन की गोद में दे दिया Y cogió el bebé y lo entregó a los brazos de Arjuna. और कहा अर्जुन जो आपको पूछना है पूछ लो। Y le dijo a Arjuna, te doy el permiso, pregúntale todo lo que tú quieras. बड़े धड़कते दिल से अर्जुन ने उसके कान में कहा महाराज कृपा करके बताओ गीता पढ़ने की क्या महानता है, क्या महिमा है। Y con mucho temor Arjuna le dijo en los oídos del bebé, por favor dime, ¿cuál es la importancia de leer el Gita? घबराने वाली बात नहीं है, बच्चे को कुछ नहीं हुआ। Y no se preocupen, no le pasó nada al bebé. बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। El bebé empezó a reír muy fuerte. कहा अर्जुन अभी भी समझे नहीं हो। Y le dijo a Arjuna que aún no has entendido. अरे जब तुम आए थे सबसे पहले सवाल लेकर के मेरे पास, मैं कौवा था, तुमने मेरे से सवाल पूछा। Y le dijo al principio cuando tú viniste a mí, yo era un cuervo, perdón. तुम्हारे दर्शन किए मैंने, तुम गीता पाठी हो, तुम्हारे दर्शन करने से ही मेरी गंदी योनि छूट गई। कौवा हमेशा गंद पे बैठता है। Dice que cuando él le hizo la pregunta y le vio a Arjuna él falleció porque el cuervo se sienta encima de suciedad, entonces le dio otra vida. वो गंदी योनि छूट गई और मैं कौवे से हंस बन गया। Y de allí del cuervo me convertí en un ciervo. और हंस जो होता है वो दूध में से पानी अलग करके सिर्फ दूध ग्रहण करता है, पानी छोड़ देता Y है। dice que los ciervos de la leche sacan el agua y solo toman la leche. तो अब हंस जब मैंने तुम्हारा दोबारा दर्शन किया तो मेरे पास दोबारा आए। Y cuando tú me viniste a ver la segunda vez, tuve tu presencia y por segunda vez me viniste a hablar. दोबारा मैं तुम्हारे दर्शन किए, मेरी हंस की योनि भी छूट गई। Y así mismo por segunda vez perdí la vida de siervo. अब देखो तुम्हारे सामने राजा का बेटा पैदा हुआ। Y ahora me he convertido en el hijo del rey.
ये सब तुम्हारे दर्शन करने से हुआ, तुम गीता पाठी हो। Y dice que es gracias a ti que yo me he convertido en el hijo del rey porque tú lees el Gita. अब तो मेरी मौज ही मौज है, राजा के घर में पैदा हुआ हूँ। Ahora yo estoy feliz porque yo he nacido como el hijo del rey y estoy en un palacio. ये छोटा बच्चा इतनी बात कर रहा था। Este niño pequeño estaba hablando tanto. उस वक्त में छोटे बच्चे पैदा होते ही बोलते थे। En esa época, cuando los niños nacían, hablaban. पशु पक्षी भी बोलते थे। Los pájaros también hablaban. उन दिनों की तो बात छोड़ो, अभी भी मैंने देखा है, थाईलैंड में जाती हूँ, एक मैना होती है, वो घंटों बैठ के बात करती है, मैं उसके पास बैठी होती हूँ, वो सारा बोलती है, जैकी हाउ आर यू, कम हियर, गिव मी वाटर, ओपन द डोर, सारी बातें करती है। Dice que aún hasta ahora, ella cuando va a Tailandia, ve a un mena, que es un pájaro que le habla, ¿no? Y habla todo. She speaks everything. Dice que habla todo. वैसे ही मैं अभी न्यूयॉर्क, Taylor is because what? Yeah, menas. तो लास्ट ईयर आई वाज इन न्यूयॉर्क, तो वहाँ पर एक पैरट था जिसके घर में, रानी के घर में। Y dice que el año pasado visitó Nueva York y se encontró con un loro. वो तो सारी बातें करता था, Dice que hablaba de todo. डांस भी करेगा, रूठेगा भी, खाएगा, रानी को बुलाएगा, मम्मा ओपन द डोर, पापा इस काम, सारी बातें करेगा। Dice que el loro hasta se molestaba, bailaba, cantaba, hacía de todo. तो आज भी पशु पक्षी बोलते हैं। Y así mismo ahora también, en el día de hoy en día, también los pájaros hablan. सारे नहीं बोलते पर कुछ कुछ तो बोलते हैं, मैंने अपने आँखों से देखा। No todos hablan, pero algunos sí hablan. तो ये बच्चे ने कहा कि अर्जुन, अब तुम्हारी बात समझ में आई कि गीता पाठ करने से कितना पुण्य मिलेगा। Y entonces le preguntó a Arjuna, el niño, ¿tú entiendes? Imagínate cuántos logros vas a conseguir leyendo el Gita. मैं सिर्फ तुम्हारे दर्शन, गीता पाठ के दर्शन किए तो मुझे इतना पुण्य मिला। Dice que yo solo he visto, he tenido tu darshan, tu aparición, ¿no? Te he visto, imagínate todo lo que me ha pasado. तो जरा विचार करो, गीता खुद जो पढ़ेगा उसको कितना पुण्य मिलेगा। Entonces imagínense cuando uno lee el Gita, qué beneficio, cuánto beneficio van a conseguir. अर्जुन की आंखें खुल गईं। Los ojos de Arjuna se abrieron. आते ही भगवान के चरणों में गिर कर के प्रणाम किया, साष्टांग। Y cuando llegó donde Dios se arrodilló ante él y le pidió bendición. और कहा, प्रभु मुझे जवाब मिल गया, इतनी गीता की महिमा। Y le dijo, ya conseguí mi respuesta, que hay tantas bendiciones y tantos buenas cosas leyendo el Gita. कहा, प्रभु जो आपने मुझे ज्ञान सुनाया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, एक बार फिर से सुना दो, मैं फिर सुनना चाहता हूँ। Y le pidió que quería escuchar lo que le había pasado en la batalla de Kurukshetra. भगवान ने कहा, बार बार रिपीट नहीं होता ये। Y Dios le dijo que no puedo repetir cada rato estas cosas. उस समय तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई। En ese momento yo derramé mi gracia ante ti. और क्योंकि अभी कलयुग आने वाला है, द्वापर के बाद कलयुग आया था, उसके तुरंत बाद। Y ahora va a venir Kalyuga, ¿no? कलयुग के लोगों के लिए ये गीता जो है बहुत ही लाभकारी होगी, पुण्य को देने वाली होगी। Y dice que el Gita es muy bueno para el Kalyuga, para la gente que está en el Kalyuga. इस तरह से गीता की इतनी महिमा है, गाते ही जाओ, जन्म जन्म जो है बीत जाएंगे, पर गीता का पार कोई पा नहीं सकता, भगवान की कृपा का कोई पार नहीं पा सकता। Dice que podemos leer el Gita, cantar el Gita y hay muchos beneficios así. मैंने हिंदी में जो अर्थ जरूर पढ़ो, पर गीता में भगवान ने जो श्लोक कहा है संस्कृत में, शुद्ध में, उसको पढ़ना शुरू करो, तो वो पढ़ने से ज़्यादा ही पुण्य मिलेगा। Dice que leamos los shlokas en sánscrito del Gita. अभी नेली पढ़ रही थी, Ahora पढ़ रही थी, 12 तक आता है और अध्ययन सीख जाओ, महाराज जी का कैसेट लेकर के सीख जाओ, सीडी ले लो, महाराज जी की सीडी है ना, बस उसको रोज सुनो। गीता मुझे कैसे याद हुई, सुबह उठते ही सबसे पहले गुरुदेव की सीडी लगा देती थी मैं, लाइब्रेरी की बात है,
अपना काम भी करती रहती और कानों में श्लोक पढ़ती रहती। ऐसे सुन के श्लोक सारे याद हो गए। Dice que la mejor manera de leer y aprender el Gita es que como tenemos el CD, entonces pongamos en el día el CD y escuchemos. Y poco a poco vamos a memorizar el Gita así. Y así fue como ella aprendió. तुम्हारे पास जो सीडी है उसकी कॉपी बना के सबको दे दो, बहुत पुण्य मिलेगा। Dice que las copias que tenemos del Bhagavad Gita, que saquemos más copias y que lo distribuyamos entre todos. Y vamos a conseguir mucho beneficio. आज मैंने किसको दी? I have Rohit and Shirish also has got it. तो काफी बन कुछ गीतू बांटेगी कमलू, कुछ तू बांटना, कुछ गीतू बांटेगी, कुछ रोहित को बोल देंगी। सबको एक सीडी होनी चाहिए, रोज गीता सुनो। Dice, सुन सकते। Dice que la madre Gitu y la madre Kamla van a sacar copias y van a distribuir para todos y ellos también van a conseguir muchos beneficios regalándonos cositas. आप संस्कृत के पंडित हो जाओगे, Y van a ser los pandit de Sanskrit. विद्वान हो जाओगे। Van a ser आप लोगों की मेहरबानी से मुझे थोड़ा मौका मिला अपनी जबान को पवित्र किया, गीता की और भगवान की बात करके। Dice, gracias a ustedes que ella ha podido hablar sobre el Gita y Dios le ha dado ese momento, ¿no? Para poder hablar. ये 5 दिन मेरे लिए स्वर्ग के दिन थे। Dice que estos 5 días han sido como el paraíso para ella. मैं कभी भूल नहीं सकती। No voy a poder olvidar. आप लोगों का जो प्रेम है, आप लोगों की सेवा श्रद्धा को मैं कभी नहीं भूल सकती। Dice que nunca va a olvidar el amor y el seva que han hecho para usted, para ella. आपको पता नहीं, मैं जहाँ जाती हूँ मैं लीमा की बात करती हूँ। Dice que viaja mucho y siempre habla sobre Lima. कि जो भजन कीर्तन लीमा में होता है ऐसा वर्ल्ड में कहीं नहीं। Que dice que todo el bhajan que ustedes, como cantan ustedes, no hay en ninguna otra parte del mundo. भगवान करे ऐसी श्रद्धा आपकी बढ़ती रहे और बढ़े। Que quiere que así mismo cada uno de ustedes tenga más shraddha, ¿no? Que mantengan más fe. बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। लाउडली Más fuerte. गीता माता की जय। वेरी गुड। गीता धाम की जय। थैंक यू, वेरी गुड। Guru Maa ki जय। que venga rápido. Very soon. आप बताएं सुबह से पूरी 6:30 बजे फ्लाइट है। Mañana Guru Maa se marcha a Estados Unidos. Viene el vuelo a las 10:30 de la mañana. Viaja por TACA. TACA 30 creo que es el vuelo. Si alguien quiere ir al aeropuerto, están bienvenidos.